यो आई एम बैक। तो दोस्तों, सारे कैसे हो? मैं सोचती हूँ कि सारे अच्छे होंगे। मेरा नाम तो याद है ना सारे को, क्योंकि मैं तो यूट्यूब की तरफ आकर 3 महीना हो गया। लग रहा है कि आपको मुझे याद होगा, आई थिंक प्रॉबली। तो आज मैं तो स्टडी ब्लॉग कुछ भी नहीं डाली हूँ, पूरा कुकिंग ब्लॉग है। मेरा फेवरेट लंच मैं आज आपको दिखाऊंगी, वो है मेरा मैंगो राइस एंड पोटैटो फ्राई। तो ये मेरा फेवरेट लंच है। समर सीजन में तो इसे मैं रेसिस्ट ही नहीं कर सकती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स गेट इनटू द व्लॉग। तो व्लॉग से जाने से पहले आपने कैसे किया आपका एग्ज़ाम को, टर्म 2? आई होप यू डिड गुड। तो चलते हैं। तो हमें आइटम्स चाहिए, एक ग्रेटेड मैंगो, फिर बाद में थोड़ा सा मस्टर्ड और उड़द दाल, करी लीव्स, ऑनियन, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट। तो अभी तेल डाल लेना एक पैन में, फिर बाद में थोड़ा मस्टर्ड ऐड कर लेना, थोड़ा सा उड़द दाल ऐड कर लेना, थोड़ा करी लीव्स, थोड़ा सा सौटे कर लेना। वो गोल्डन ब्राउन होने के बाद थोड़ा सा ऑनियन डाल लेना। ऑनियन डालकर थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के लिए डाल लेना, डालकर थोड़ी देर सौटे कर लेना। इसका स्मेल ना बहुत अच्छा रहता है, ये मैंगो रेसिपी का स्मेल बहुत अच्छा रहता है। इसका टेस्ट ना रियली फैबुलस, बहुत अच्छा रहता है। If any Tamilians is here, உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும், மாங்காத்தோட டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர், add some turmeric powder and let it saute, and add some grated mango and then just mix it for 2 minutes without any lumps and cover it and let it for 10 minutes. And it's ready. So the smell was like so awesome. It was like really, I really remember my grandma's taste. I don't cook that much, but my grandma cooks so tasty. So now add some rice to it and then mix it without any lumps, so it will taste so great. And add some salt and enjoy. No, you should not enjoy now, you should make potato fry too now, right? So let's do potato fry. That's the best side dish for this mango rice. Okay, now heat up a pan and add 4 tablespoons of oil, and then add some jeera, and then some curry leaves and the onion, and give it a saute, and then add the masalas, turmeric powder, chili powder, coriander powder, and at last add some black pepper powder. So it will be so good and the taste will be like feeling the heaven. And add some potatoes and cook it for 10 minutes. And really it smells so good, and it's really crispy outside and soft inside. So it's my favorite food, and for the love of it, I really like it. So you really like my video, and meet you in next vlog. And next was all about my stream selection and what aspirant I'm going to be. So there is a big confusion between NEET and UPSC for me. So let's see it in the next vlog. Stay tuned. Thank you. Bye bye.